my own journey. So I start from Bhopal. That's born 82, like long time back. Really, my journey starts from Bhopal Gas Card. Who looks for कि चलो let's go for IIT. तो उसकी पढ़ाई करी एक साल कोटा, then went to IIT Kanpur. 2016 is when I joined Swiggy as a VP of product. While it's called Vice President of Product Management, but in a way, it wasn't only product management because I was leading 0 to 1 initiatives and the products for those because they are actually not in the market. Market सब कुछ product ही है उसमें. There is a lot of resistance generally for people to get into the unknown. Case studies which you came across during your 0 to 1 journey. I think Swiggy के आप examples दे रहे थे. If you could share those, some of those examples. So Naveen, I really believe in this concept of range, right? And range means you should not be good at only one thing. And I think अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हो, definitely like there's a good chance that you'll be successful because you're obsessing about it. But range means that your personality has like exposure to like a whole bunch of other things as well. वो हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अगर आप ऐसे सोच सकते हैं तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं सोचूं? Also Swiggy के अंदर ना नवीन एक बहुत interesting चीज़ है, and while we were talking about smart, but even in food delivery, the way you think about that business is कि it is not only a consumer business. अच्छा. Product management plus product marketing एक ही चीज़ है. अच्छा. आप ही का काम है कस्टमर लाना और उनको सर्व करना. हाँ. अब सिर्फ आप ये नहीं कर सकते हो कि I will build things and people will come. Now your eye for finding a real market gap has to be way sharper. We have Anuj with us today. He's a Chief Product and Marketing Officer of Jupiter Money. So thanks a lot, Anuj, for taking out time. So मैं और अनुज इस तरीके से मिले थे कि so we met at a community event named BHX in Goa and हम लोग ने almost हफ्ता बिताया था साथ में. Yes. And so much fun it was. There was a lot of fun. Let's keep it that way. Where Anuj, we had the privilege to hear his guitar, singing, and everything else. So we saw a very different side of Anuj. And since then, honestly, Anuj, I've been wanting to know more about you as a person. We have done one session of what your passion is with regards to cards. So at your house, so that was fun as well. So Anuj, the objective out here is that हम लोग casual chat करेंगे. Yes. We'll touch upon different aspect of your life, right from professional to personal, and your views on various things also. So yeah, thanks a lot for coming. And to begin with, for our audience, I'm sure within startup community you are quite known. But for a broader audience, if you could throw a little bit more light on where you come from and a little bit about your professional journey. Yeah. So first up, thank you, Naveen. And thank you, Swati. Thank you for having me here. It's really like amazing. Like we just met in August yes. or sometime for a week in Goa, and we had a blast. Like you mentioned, like we did like guitars and all of that together, and then like we played poker at my place. Yeah. Now coming to the serious conversation of the podcast. So yeah, hi guys. My name is Anuj. I am right now the Chief Product and Marketing Officer at Jupiter Money. It's a neobank, and here essentially I work with Jiten here to create a company which essentially can become the financial wellness companion for Indian consumers. So my own journey. So I start from Bhopal. That's born 82, like long time back. Really, my journey starts from Bhopal Gas Card and gas tragedy. Oh, wow. So long story short, like actually studied there, and then eventually like a normal person at that time who looks for कि चलो let's go for IIT. तो उसकी पढ़ाई करी एक साल कोटा, then went to IIT Kanpur, chemical engineering, and in 2005 I graduated. I think startups were not like very very big then. I didn't even know that there's a world जिसमें startups बनती हैं, बड़ी company नहीं होती, etc. But somehow I always got attracted towards let's build something, and let's build something for Indian consumers. Somehow इतना framework नहीं लगा था उस समय. So I worked with some interesting startups. First worked with an American startup called Pi Corporation, then worked with an Indian startup called Ask Lala. It is still alive, by the way, for 2.5-3 years. Couple of startups later, this is where I was like a front-end engineer. So always been very focused on building something that users actually use. In a way, I think
natural tendency हो सकती है, या because I was building something and I could see my products being used by actual users. I think वो skill काफ़ी develop करी मैंने, और अपने आप होती भी गई. So when I was interviewing for Flipkart, in fact I was interviewing for a technology front-end engineering role in 2010, and Sachin Bansal was the CEO at that time, and in fact वो वैसा हुआ कि he said कि product करते हैं, so you should do product management here. It's a new role, and at that time इंडिया में product management होता नहीं था, इंडिया में products ही नहीं होते थे ज़्यादा. So I think there were very few products which were built for Indians and built in India. Flipkart was one of those, so that kind of gave me a break into that, and I was the first product manager there, and I think the company grew basically 100x in the next 2.5 years that I was there. So वो बहुत interesting था. It was just a book selling website, not just, but with very large ambition of becoming essentially India's e-commerce behemoth that it is today. So yeah, a very interesting journey of those couple of years. Went to Walmart उसके बाद में a couple of years, worked for store services, that essentially products in which you have to go to the store, but they will be home delivered to you, or you have to order online, but you have to go to the store to collect. Okay. So just to give an example, pharmacy, like you ऐसे नहीं order किया आपके पास आ गया, you have to go and actually collect it because pricing etc will be different. Anyway, so a couple of years there, back to India, worked on Snapdeal, and then 2016 is when I joined Swiggy as a VP of product. Well, it's called Vice President of Product Management, but in a way, it wasn't only product management, because I was leading 0 to 1 initiatives, and the products for those, because they are actually not in the market. सब कुछ product ही है उस समय. So things like Swiggy Genie or Instamart and so on all came out of that bunch of failed experiments around that also. And also around actually leading growth for scale products. So well, started in product, but expanded into revenue growth, marketing, and what I now call as a full stack product management. For me, it is still like the love of my life. So yeah, I was there for like 7 years plus, and very recently now started Jupiter. So sorry, long story for till we reach Jupiter हमारी. लॉन्ग क्या मतलब इतने इलस्ट्रियस करियर के लिए तो ये काफ़ी शॉर्ट ही है. आई मीन सो जस्ट डबल क्लिकिंग ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ दैट. सो अब हम लोग ही स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी हायर करते हैं, एंड एक स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टार्टअप्स के लिए इज़ दैट they always want somebody who have seen that 0 to 1 ka journey. And whenever you speak with people, a lot of people will claim to have done that, right? But what it goes in doing it, I mean, obviously is very different. So जैसे let it be an employee or for that matter whoever wants to start something of their own, there is a lot of resistance generally for people to get into the unknown. ठीक है, तो वो आपने कैसे, मतलब how did you overcome that? Because I believe that within Swiggy also, जब हम लोग की BHX में बात हो रही थी, तो फिर you spoke a lot about there were मतलब multiple stories which you illustrated that which made you learn so much while navigating all of that, right? तो वो so आपको ऐसा क्यों मतलब do you also feel that people have this resistance, or you have seen both mixed bag of people in your life also? Because so that's an excellent question, Naveen. पता है मैंने दोनों तरह के लोग देखे हैं, and to some extent I have the vantage point of looking at people who are both कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक करियर देखा होता है और उनके लिए एक प्लेबुक होती है, ऐसे ऐसे करके हमको ऊपर जाना है, इवन इफ दे आर वेरी गुड, इफ दे कैन बी क्रिएटर्स, लेकिन they are just going through their careers and आज प्रोडक्ट मैनेजर हैं, फिर सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर बनेंगे, फिर प्रिंसिपल प्रोडक्ट एंड सो ऑन, एंड इवेंचुअली डायरेक्टर, वीपी, सीपीओ, जो भी उनको वैसे बनना है. उनके लिए ना दे a lot of them I see जो उनको एक स्केल प्रोडक्ट ऑलरेडी मिलना चाहिए, they will kind of work towards इसको ग्रो कैसे करना है, इसमें नए फीचर्स कैसे बनाने हैं. And when I say product, it can be like marketing, it can be engineering, it can be like really CEOs, etc. They are good at that part, and there's a lot of fear of the unknown. Either there's fear of the unknown, or they many cases they don't realize कि यार कुछ नया क्रिएट करना है ना, so this playbook will not work. Now I can't do जो मैं रेगुलर प्रोडक्ट्स में बना रहा हूँ, वैसे मेरी स्टार्टअप में है कि कुछ ही नए 0 to 1 में सेम चलेगा, तो वहाँ काफ़ी लोग गलती करते हैं. उसी तरह मैं दूसरा भी देखा है, there are a lot of people who start from कि यार I have hopes and dreams in my mind, let me try out 10 things, तो अब कुछ करना शुरू कर देते हैं. So I see a lot of false starts also. They keep on doing it after like a few years, and then they will realize
कि यार नन ऑफ दिस इज वर्किंग, तो कैसे फिर बनाया जाए 0 to 1. हाँ, So both, in my opinion, both of them have a lot to learn from each other. sure. But fundamentally, I think what is required is courage. Uh, Also, in my opinion, fundamentally, what is required is just getting started. Like a lot of people just don't get started. They just are like thinking and thinking and thinking and so on. Third thing that I realize is they need to work backwards from a future. So I call it working backwards. और essentially आपको देखना चाहिए कि यार 6 महीने में या जो भी आपके दिमाग में है, यू शुड बेसिकली थिंक कि ABCDE थिंग्स मस्ट बी राइट. मेरा प्रोडक्ट ऐसे चल रहा होगा, मेरी मशीनरी ऐसे चल रही होगी, ये मेरा TG होगा, इस तरह के लोग मेरे पास आएंगे, एक्सेट्रा. आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट होना चाहिए rather than just getting started towards something random. So that I have not seen Can work. you give an example of this? मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपको if I'm a layman in product world, so अगर आपको मुझे समझाना है कि किस तरीके से तेरे को अप्रोच करना है, कल ऑफिस जाएगा तो सबसे पहले ये बना अपने लिए. ठीक है. दो चीज़ें होती हैं. जैसे मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आपको एक फ़ोन लॉन्च करना है. ठीक है. मान लो आप कभी आईफोन बना रहे थे. अब I'm just saying taking the because that's the most egregious example, right? Correct. You cannot iterate your way towards building an iPhone क्योंकि आपको फाइनली क्या आपके बनने वाला है, आपके दिमाग में कुछ आइडिया होना चाहिए. अच्छा. और आपके दिमाग में एक डेट होनी चाहिए कि इस डेट से बैकवर्ड ऐसा मोटा मोटा प्रोडक्ट मेरा दिखना चाहिए. And what will be required between me and the people who I have around, the capabilities and the craft and the process that will take me towards that. So it starts there. Unless you have a vision, और मैं vision ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया भर की vision है कोई आपकी कि let's make world peace type की vision नहीं है. Crisp vision of कि मेरा product ऐसा दिखना चाहिए. और जब मैं product बोल रहा हूँ, it can be actually a process, it can be a business, whatever. ऐसा दिखना चाहिए उस GTM पे, मतलब गो टू मार्केट पे. एंड देन यू वर्क बैकवर्ड्स टुवर्ड्स दैट. यार ऐसा दिखाने के लिए क्या क्या करना होगा, Sure. वैसा प्रोसेस चाहिए होगा, वैसे लोग चाहिए होंगे, उस तरह का चीज़ होगी. एंड देन यू गेट स्टार्टेड. अब क्या होता है ना, व्हेन यू गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग समथिंग, देन एक्शन प्रोड्यूसेस इन्फॉर्मेशन. कुछ करते हो क्योंकि आपको सब चीज़ें तो नहीं पता है शुरू में, फिर आपको नई इन्फॉर्मेशन आती है, फिर आपको ट्रेड ऑफ लेने पड़ते हैं कि यार ये फ़ोन के अंदर ना ऐसा ग्लास नहीं चल रहा है. मैंने सोचा तो था लेकिन कुछ और चाहिए होगा. फिर आप उसको हटाते हो और यू एक्चुअली फाइंड आउट अ चाइनीज मैन्युफैक्चरर विल डू दैट. देन यू से कि यार ये टेक्नोलॉजी आती नहीं, अभी एग्जिस्ट नहीं करती, इन्वेंट करनी पड़ेगी. सो दैट बैक एंड फोर्थ हैपेंस. एंड देन यू थोड़ा थोड़ा चेंज द विजन ऑल्सो. बट इफ यू आर एबल टू हैव constantly evolving high quality vision and the process to reach there, that is in my opinion one of the best ways to create something new. अच्छा. और ये 0 to 1 के अंदर लोग गलती करते हैं, कई बार वो विजन नहीं करते हैं और कुछ भी बनाने लग जाते हैं. और तो वो भी एक गलती है. कुछ लोग जिनको सिर्फ वो आता है कि यार हमको ना एक स्केल प्रोडक्ट बनाना आता है, तो फिर वो दूसरी गलती करते हैं कि विजन तो सब है लेकिन द एक्ट ऑफ क्रिएशन, लर्निंग एंड ऑल ऑफ दैट वो नहीं होता है. सो आई फील लाइक बोथ विल नीड टू लाइक वर्क टुगेदर. सो व्हाट आर द मतलब सो इसके लिए मतलब do you need to be intrinsically is this an art or a science? Can you learn this? It is both. It's a great question. It is both. It is an art and it is a science. It is an art because you're fundamentally creating something that does not exist today. Exactly. हो सकता है आप कुछ copycat भी कर रहे हो, मतलब that is also fine. If you are in a marketplace where a lot of competitors exist, sure, वो हो सकता है. But you are creating something, so it is an art. But सारा art ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर आप every art is successful. There is a science behind it, and I think the inherent qualities that a person needs to have is definitely going to be like a lot of curiosity, कि वो and a very high standards of actually उनको क्या बनाना है उसके लिए. Once you have a high standard, and if you are creating that and if you have curiosity, तो आप उसको करते रहेंगे, but you learn from the process, you keep on getting better, and then over a period of time, then something beautiful starts coming out that you can take to the market. Okay. Can you give me couple of because I believe that जब हम लोग last time मिले थे वहाँ पे, तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था of couple of great मतलब case studies which you came across during your 0 to 1 journey. I think Swiggy के आप examples दे रहे थे. If you could share those some of those examples, it just blew my mind कि आप किस तरीके से problem को अप्रोच कर रहे थे, राइट? सो एंड वो हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अगर आप ऐसे सोच सकते हैं तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं सोच रहा हूँ. तो उस तरीके से बिकॉज आई बिलीव दैट यू ऑल्सो अप्रोच मतलब यूज अ लॉट ऑफ दीज methods or approach in your while you play poker, which you are so good at as well, because that also I believe that there's a lot of science involved over there as well.
So if you could share some of those case studies of your 0 to 1 journey, Right. then it would be really helpful. So I will share the case studies also. But पहले आपने एक interesting point बोला उसमें. So let's talk about that first. Sure. Because we talked about say poker and we talked हाँ, about Swiggy and we talked correct, about guitar and so on, right? correct. Which we were talking just before this. Yeah. So Naveen, I really believe in this concept of range, हाँ, right? And range means you should not be good at only one thing. And Yeah. I think अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हो, definitely like there's a good chance that you'll be successful because you're obsessing about it. But range means that your personality has like exposure to like a whole bunch of other things as well. And mind works in mysterious ways. A lot of dots connect and it makes you more creative. It makes you better in a lot of those other fields. आप एक field की चीज़ दूसरी field में ला सकते हो और eventually जो आप बनाते हो बहुत interesting होता है. We talked about say Roger Federer versus Tiger Woods. So Tiger Woods was a child prodigy. वो 3 साल का था तब से golf खेलता था, 5 साल का था अपने बाप को हराता था. And he kept on playing that and of course he became like that. वर्सेस रॉजर फेडरर जब तक वो 18 ईयर्स का था तब तक उसको पता ही नहीं था कि उसे टेनिस में ही खेलना है. ही वाज गुड एट दैट आल्सो, बट ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड टू प्ले स्क्वॉश एंड अ होल बंच ऑफ लाइक अदर रैकेट स्पोर्ट्स एंड बॉल स्पोर्ट्स एंड सो ऑन. So he was able to bring like a lot of elements from these other sports to his core game once he decided, and then that became his like signature style, and he kept on improving and so on. So that I think is like a very important concept that I feel like everybody should think about. So in that. इसके ऊपर एक मेरा view है. I हाँ. mean, which I thought that I'll ask during the podcast because because एक चीज है कि whenever we look at youngsters or whoever joins us, उन लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि I mean, the work should keep me excited. I mean, I need to be thrown challenges day in and day out, and then उसके बाद it should not become monotonous for me, right? And so मेरा ये मानना है कि अब रॉजर फेडरर कब डिसाइड किया? अगर वो चलता रहता कि चलो यार कल फुटबॉल खेलते हैं, परसों क्रिकेट खेलते हैं, नरसों बैडमिंटन खेल लेते हैं, अब रैकेट स्पोर्ट्स का रेंज 30-32 साल तक के चल ही रहा है, तब फिर तो लग गई, राइट? क्योंकि एवरीडे नया एक्साइटमेंट है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक मतलब सो आज की डेट में when what I feel is that the way you achieve perfection is when you keep doing those monotonous things with the same level of excitement every day. Correct. And the world is moving towards super specialization more and more rather than becoming a generalist. I think you were approaching there कि eventually find your वो hook. Yes. But so what you are saying is that your personality should have different aspects, or I mean, or you are saying that you should keep trying different things till you find out your bow. So in a way, I'm saying both things, but I'm saying first one the more here actually, which is everybody can't be great at everything. Yeah. Definitely, and we don't have infinite time in the world to keep on trying a bunch of things and never converge. But we must diverge before we converge. Yeah. I think that's the core point that I'm trying to make, because the divergence keeps you giving more information, but once you converge, then the name of the game is resilience. Then उसके बाद में है कि it's a tough challenge and maybe you can see it for like say 3 years तक आपको ये करते रहना है with no dopamine hits in sight. कभी-कभी आपको एक साल तक जाना पड़ेगा without like getting any feedback loop कि यार कुछ अच्छा भी हो रहा है. Yes. But you have to like keep doing that, believing in it, and keep working towards that. Yeah. What I was talking about was in terms of generally acquiring skills and applying them to like your core discipline. But your core discipline is your super specialization. तो आपको अच्छा करना ही है. Yeah. Understood. So now coming back to your original question, the case studies, from Swiggy and I think Swiggy की भी हो सकती है, कहीं और की भी हो सकती है, but मुझे लगता है कि एक fundamental चीज़ ना, नवीन, if you approach it from a point of view of what I call is lazy, vain and selfish customers, then you are able to get to like a much better answer with respect to आपको market में क्या लेके जाना है, especially if you are in a B2C market, जब आप direct to consumer कोई चीज़ लेके जाते हैं. So modern internet consumers they have these 3 attributes, and again I will say this in a provocative way, but I believe it to be true. They are lazy. They don't have time for any of whatever you're selling them. They are vain. उनकी एक habit बनी हुई है. And here you come with your product and say कि अपनी habit change कर लो. तुम कुछ और करते थे, आज ये करने लगो. And they're selfish, which means they are कि उनको like what is in it for me.
Yeah. So this is a framework that I picked up from Scott Bilski. He was, I think, Adobe ka CEO and like I think Behance CEO and so on, but very powerful articulation. So whenever you're taking something to the market, think about कि आपको उस consumer को जिसके पास ये attributes हैं और ऐसा दिखता है वो इंसान, you should have like a clear understanding of what that person is, your TG, your persona, whichever way to call it. How do I build something जो इस consumer को appeal करे और change कर पाए? So that's almost like the starting point. And then you can actually start building and almost evaluating कि यार ये इसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, and so on, right? So at Swiggy, for example, now when we are building, say, say Instamart, right? Like, for example, हमने पहले first iteration was called Swiggy Stores. Sure. We said जैसे हम लोग बनाते हैं उसके लिए, what do you say, a marketplace for food delivery. We were saying कि let's expand this. Or build something like a marketplace for grocery stores, or basically everything किसी और के लिए भी बना सकते हैं. We took it out to the market, and we started seeing कि यार थोड़ा there was a lot of learnings and so on. We were getting better, but it is what we say, we were still not able to find what we call the product market fit, where consumers just love this product so much that they will keep on coming back to us. Then what struck us कि यार एक काम करते हैं, खुद का स्टोर चला के देखते हैं, and that we used to call urban किराना. मैं खुद का स्टोर जब चलाया, फिर हमने देखा कि यार इसका NPS बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एक्चुअली कंज्यूमर्स को ना ये नहीं चाहिए कि उस स्टोर के अंदर मैगी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, चलो देख लेते हैं, वी आर जस्ट कनेक्टिंग यू इन एक स्टोर से एक यूज़र को कनेक्ट करा दिया तो कुछ बन जाएगा. उस तरह की चीज़ें मतलब चल रही थी. पीपल वर स्टिल ऑर्डरिंग फॉर कन्वीनियंस, बट इट वाज नॉट वर्थ इट विद रिस्पेक्ट टू, दे वर नॉट रिपीटिंग विद अस क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था एक्सपीरियंस के अंदर. बट वंस वी फाउंड कि क्या अर्बन किराना विच इज़ लाइक इन अ मार्केट प्लेस, हमारा खुद का एक स्टोर है जो चल रहा है, he said, all right, now this is it. Now this is the kind of product that we really want to like go after in a big time. अब हम मार्केट प्लेस मॉडल बंद करते हैं, अब ये अर्बन किराना वाला मॉडल को पूरा बना लेते हैं, कि how we can actually build like a network of pods across the city, because then we will be able to promise you a 10-minute delivery across or wherever you are, across these categories and so on. फिर हम उसको लेके जाते हैं. But once again, approaching from a lazy way and selfish point of view, because is it fundamentally better? Is it something that you would not get there? Is it better than, for example, your नीचे उधर के किराना स्टोर को आप लेकर आ जाओगे या नहीं, etc. So that's one of my favorite examples to give. Also, Swiggy के अंदर ना नवीन एक बहुत interesting चीज़ है, and while we are talking Instamart, but even in food delivery, the way you think about that business is कि it is not only a consumer business. वो एक three-way marketplace है. So consumer है, there is a restaurant, and there is a delivery executive. Now imagine this ना कि आप किसके लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो. ऑलमोस्ट लाइक अगर आप कंज्यूमर के लिए ऑप्टिमाइज करोगे, फॉर एग्जांपल, एंड सेइंग कि यार इसको ना कम पैसे देने चाहिए, सो देन डिलीवरी फीस मस्ट बी लो. बट देन व्हाट डज दैट मीन? ईदर यू नीड टू कवर दैट मनी फ्रॉम द रेस्टोरेंट विद हाई कमीशंस, or you need to basically remove earnings per hour of the delivery executive to give the customer that, or Swiggy will need to, or like whichever marketplace will need to burn money. So that balance is the one which is extremely critical to find. And remember, that balance is not like a perpetual balance. That balance will need to happen at every second and at every location, because Swiggy is different, 5 minutes from now and 100 meters from here. तो वो change होता रहेगा real time dynamics के अंदर. And you have to find it out कि कैसे चला. Another way to look at that, for example, you see Amazon, it's like a two-way marketplace. It's like buyers at one side and sellers on one side, hundreds of millions of products in between. ठीक है, लेकिन आप you expect almost like a kind of experience that will come. Compare that with a different kind of marketplace, which is Uber or an Ola. कि buyers at one side actually buying, passengers at one side and drivers at the other side. But आपके पास में 5 choices हैं, 5 SKUs, right? Correct. कि आप black ले लो या फिर कुछ और ले लो and so on. But 5 choices. In a company like a Swiggy or a Zomato, actually consumers expect an Amazon kind of behavior, but नीचे Uber चल रहा है. So what looks very, very simple to you actually is very, very dynamic. So when you are building the cart, at the same time, the drivers in that area may have moved, the consumers orders may have come, some restaurants के order चल रहे होंगे, and dynamically आपको manage करना है उस चीज़ को. और वो सब चीज़ें जयपुर लंच के लिए डिफरेंट हैं और कोरमंगला डिनर के लिए डिफरेंट हैं, और फॉर एग्जांपल गुवाहाटी स्नैक्स के लिए डिफरेंट है. हर दिन जब वहाँ पे डिलीवरी बॉय कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं, कंज्यूमर्स की छुट्टी है या नहीं है, एंड सो ऑन. इट इज़ वेरी वेरी रिच एंड विविड एंड डायनेमिक मार्केट प्लेस. सो व्हेन यू बिल्डिंग प्रोडक्ट फॉर मार्केट प्लेसेस लाइक दैट, यू नीड टू वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम एक्चुअली एक हफ्ते बाद में प्रिडिक्ट करो
कि सप्लाई कैसी चल रही होगी, लाइक देयर इज अ ग्राफ राइट, लंच के ऊपर बढ़ रहा है नीचे हुआ, फिर डिनर के ऊपर बढ़ रहा है कम हुआ. नाउ हाउ डू आई मैच मेक दिस विद डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स एंड देन से कि उतने लोग इससे मैनेज चाहिए, इतने मैं अर्निंग्स पर आवर दूंगा तब वो आएंगे, उतने रेस्टोरेंट मेरे पास होने चाहिए, इतना मैं कंज्यूमर्स को डिस्काउंट दूंगा या कुछ और दूंगा तब वो आएंगे, इतने कम्युनिकेशन भेजूंगा और अपने आप को जिस दिन कुछ चल रहा है, एंड देन हाउ डू आई मैच मेक एंड स्टिल मेक मनी, एंड दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, यू कीप ऑन डूइंग this over and over again. Yeah. But you can't do this unless you do a great planning environment. Superb. I mean, quite a masterclass you are giving us with regards to the approach itself. So what I wanted to understand, Anuj, is that today, let's say, if in case a fresh product manager comes to you as a mentor, right, or somebody who wants to build a career in product, then what are some of the key to-dos or not to-dos which you will tell that person, which can help that person navigate their career and help them grow as well? Yeah. I think product management is a very interesting field, yaar, Naveen. इसमें either you can say कि मुझे एक बिग कंपनी प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, देन ऑफ कोर्स लाइक डोमेन नॉलेज होना चाहिए, बट इरिस्पेक्टिव यू विल स्टिल नीड टू वर्क विद इंजीनियरिंग, यू स्टिल नीड टू वर्क विद डिजाइन, यू स्टिल नीड टू वर्क विद बिजनेस, यू स्टिल नीड टू वर्क आउटकम्स एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर, क्योंकि बाय डेफिनेशन इट इज अ रोल व्हिच इज क्रॉस फंक्शनल, आपको सब कुछ आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो कि जब सब आना चाहिए ना, तो अगर आपको इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं है एंड देन यू स्टिल फेल, और लाइक एक एस्पेक्ट का यू स्टिल फेल, लाइक हाउ डू आई इवन इवैल्यूएट एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मैं देखता हूँ इसको कि प्रोडक्ट मैनेजर शुड हैव अ फाउंडर माइंडसेट. फर्स्ट थिंग तो वही है, फाउंडर माइंडसेट एंड ऑलमोस्ट फाउंडर लाइक स्किल्स, which is they don't constrain themselves, they try to become full stack, and literally every problem is then their problem. So that attitude I think is going to help them a lot, rather than मैंने अपना काम कर लिया बाकी तुम लोग जानो. I think of all teams which are going to deliver a particular product in the market, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, उसमें आपके पास सफिशिएंसी होनी चाहिए. You have like a great business case to work on, of course, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो. You need to have like a great product vision कि यार ये बनाना है, तो along with your designers, like, or you yourself define कैसा बनना है. You need to have the capability in engineering to make that happen. You need to have a process जो भी ये सब साथ में song and dance करेंगे eventually बन पाए. So product manager has to fulfill the role of sometimes a QA, sometimes a designer, sometimes a founder himself, and their job is essentially the speed and quality of decision making and delivery both. So वो दोनों चीज़ें. So that's one. B, I think product managers now in today's world cannot be only internally focused. And that's true for founders also. That's my advice to most startup founders also. You cannot be only invested in कि ये बनाते हैं, अब उसके साथ में ये बेचते हैं, is going to be as important. And that's most product managers, they're just not good at that. And even a lot of startup founders, for example, especially who are coming from the engineering, sciences, technology background, builder background, etc. I think now that has got to change. I think they will just make like so many more mistakes. So many people have like, ये product तो बना लिया है यार, अब मुझे समझ में नहीं यार पहला कस्टमर कैसे लेकर आऊँ, या फिर ये मार्केट में कोई ले नहीं रहा है, एंड सो ऑन. But if you started backwards from, like, while you're doing all of that, you started backwards from what I was saying, lazy, vain and selfish customer, तो आप सोचेंगे why does he care, and you will start like peeling the onion a lot faster, a lot earlier, and so on. तो आपके दोनों ट्रैक साथ में चलेंगे, बनाने का और बेचने का. The product managers have to do that, and so do founders. Hence, I think a lot more PMs and early stage founders will need to be very good now at marketing. Will need to be very good at sales. So let me give an example, right? Product managers क्या सोचते हैं, जब यूजर आ चुका है मेरी ऐप पे या मेरे प्रोडक्ट पे है, तब मैं क्या बनाऊं जिसके लिए उसका पूरा फ्लो अच्छा हो और उसको मजा आए, एंड सो ऑन. दोस्त, अगर आपकी कैटेगरी में, आपके टीजी में 1,00,000 लोग हैं, आपके पास 100 ही तो लोग हैं इस समय. उन 100 को छोड़ो, जो 99,000 लोग अभी नहीं आए हैं, उनके लिए क्या बना रहे हो कि आपका प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच भी पाए. And you ask that question and they will not have an answer most probably. Even marketers don't tend to have like that answer. So I think full stack product managers and founders will need to now start searching those points way faster in the. इस एग्जाम्पल जो आपने एग्जाम्पल दिया, उससे एक मेरे को अभिषेक उपमन्यु का एक जोक याद आया. सो द वे इट गोज इज दैट, जो मैं सबसे पहला वीडियो जब मैंने उसका देखा था, तब फिर मुझे याद है उसने, सो ही वाज ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, एंड ही वाज गोइंग टू नासिक, आई थिंक.
तो उसके बाजू में एक लड़की बैठी थी और फिर उसके बाद उस लड़की से उसने पूछा कि आर यू फ्रॉम बॉम्बे, तो वो बोली कि नो आई एम नॉट फ्रॉम बॉम्बे, आई एम फ्रॉम साउथ बॉम्बे, तो पूरा एक्सेंट में। तो फिर ना उसको हो सकता है इसको लगा कि शायद कोई और जगह होगी, तो उसने बस पूछा कि डू यू नो हाउ टू रीच नासिक, द वे टू नासिक, कैन यू एक्सप्लेन मी। तो या इट्स सिंपल, I mean, you just get down of the airport, go and take a taxi and tell them that I want to go to Nasik. तो फिर वो बोला कि अरे ऐसे तो फिर मैं अमेरिका का रास्ता भी जानता हूँ। तो सो ही सेड, ही ड्रू एन एनालॉजी दैट मेरे ख्याल से जब साउथ बॉम्बे वाले लोग होते हैं उन लोगों को हमेशा ये लगता रहता है कि पैसा तो सबके पास होता है, हो सकता है ये नहीं पता हो कि खर्च कैसे करना है। तो फिर वैसे ही मेरे ख्याल से आजकल के प्रोडक्ट मैनेजर्स हो गए, उन लोगों को लगता है कि कस्टमर्स तो आ ही गए हैं, हो सकता है उनको नेविगेट करना ना पड़े। नहीं, डोंट गेट मी रॉन्ग, दोनों या इम्पोर्टेंट है। जब आ गए हैं तो भी एक्चुअली कैसे नेविगेट करना है, कई लोग को तो वो भी नहीं आता है। एंड आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ यू नो फाइट्स टू पिक ऑन दैट पार्ट आल्सो, कि आपको प्रोडक्ट बनाना भी जब आप देख रहे हो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, दूसरे से तीसरी, और एक्चुअली जो भी आप यूज़र की जर्नी है, प्राइसिंग है, जैसे भी वो भी आपको कितना अच्छे से आता है, लोग वैसे भी नहीं सोच पाते हैं नवीन। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। उस पर मैं आता हूँ अभी 2 मिनट में। अच्छा, बट मैं बोल रहा हूँ वो तो आधी प्रॉब्लम है, हाँ, एक्चुअली वो आधे से कम प्रॉब्लम है। द फर्स्ट प्रॉब्लम है कि लोगों को आप चाहिए भी कि नहीं। वाह, सो देयर इज दिस यू नो वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क बाय मार्टी केगन, इट्स कॉल्ड 4 रिस्क्स। कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो ना, उसमें 4 रिस्क होती है। पहली रिस्क होती है वैल्यू रिस्क, वेदर कस्टमर्स, potential customers will choose you and are they willing to pay for your product, that's one। ठीक है, दूसरी होती है यूजेबिलिटी रिस्क, कि आ तो गए, अब वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो भाग जाएंगे। या, ठीक है, थर्ड वन इज़ फीजिबिलिटी रिस्क, कि आप बना भी पाओगे कि नहीं। सो फिनटेक में ये सब भी होता है, बना तो पाओगे, कंप्लायंस है, कुछ और है, इंजीनियर्स ही नहीं बना पा रहे, आपके टेक्नोलॉजी नहीं आपकी टिक रही है, एंड सो ऑन। द फोर्थ रिस्क इज बिजनेस वायबिलिटी रिस्क, सब तो कर लिया, बिजनेस ही नहीं चल रहा, नंबर्स आर नॉट एडिंग अप। सो दीज आर द 4 रिस्क्स। एंड आई थिंक टुडेज नहीं है ये, हमेशा से रहा है, वैसे ट्रेडिशनली भी ऐसा रहा है। प्रोडक्ट मैनेजर्स फोकस अ लॉट ऑन थर्ड एंड फोर्थ। दे फोकस ऑन मेरे इंजीनियर बना पाएंगे कि नहीं, एंड बिजनेस मैनेजर्स क्योंकि उस तरफ से आते हैं कि धंधा चलेगा कि नहीं। ये दो चीज़ आती हैं। फर्स्ट एंड सेकंड एक्चुअली आर विद द क्राफ्ट पार्ट ऑफ इट कम्स अ लॉट मोर। सो यू नीड टू हैव इनसेन अमाउंट ऑफ क्राफ्टमैनशिप टू बेसिकली बिल्ड समथिंग दैट इज यूजेबल ही नहीं, लवेबल है, मतलब मज़ा है उसको यूज़ करने में, एंड वैल्यूएबल है, लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, and you are able to find that, you are able to find distribution for that, and it's a journey, it's a very hard thing to do, it's not easy at all। बट मेरा एक और पता क्या रीजनिंग है, कि थर्ड एंड फोर्थ ना, और एक्चुअली सेकंड थर्ड फोर्थ बोल सकते हो, रिस्क ना वो कंट्रोलेबल होती है। क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजर्स भी और स्टार्टअप फाउंडर्स भी कई बार वर्क ऑन थिंग्स जो हाथ में है, टेक्नोलॉजी बनाना आपके हाथ में है, बिजनेस मॉडल बनाना आपके हाथ में है, पीछे से अगर कुछ नहीं हो रहा है, यू कैन स्टिल वर्क विथ योर इंजीनियर्स, यू कैन हायर, यू कैन गेट वीसी मनी, थोड़ा कंट्रोलेबल है, तो आप वो करते हो। और जब दिन में 12 घंटे 14 घंटे करते हो, इट गिव्स यू लाइक अ जॉय कि हमारे काम किया, वैल्यू ऐड करी, कुछ काम हो रहा है, मूविंग थिंग्स। बट वैल्यू रिस्क तो मार्केट के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है, तो वो अनकंट्रोलेबल है एक तरीके से। So you need to have like a lot more work done towards that, to actually uncover those risks, and those are tough questions to ask। तो कई बार आपको लगेगा 12 घंटे काम कर भी यार वो तो सॉल्व नहीं हुआ। So tell me something, एक अब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इन योर जर्नी लास्ट 15-16 साल में जो भी आपने काम किया प्रोडक्ट और मार्केटिंग में, आपके एंड आई यू मस्ट हैव मेट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड प्रोडक्ट लीडर्स, Yes। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ प्रोडक्ट टैलेंट इन इंडिया, मतलब इफ यू हैव टू रेट देम आउट ऑफ 10, 10 being the best, so how much would you Okay, so two things, right? Like when सो एक इसका थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है, और एक इसका रियल आंसर है जो मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर, और वो भी है कि आई थिंक लुक, प्रोडक्ट मैनेजर्स आर गेटिंग गुड एंड बेटर एट डोमेन नॉलेज नाउअडेज, तो वो अच्छा कर रहे हैं, लोग अपनी डोमेन के अंदर डीपली जा रहे हैं। तो एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स एक्चुअली अब थोड़ा एआई जानते हैं, फिनटेक प्रोडक्ट मैनेजर्स एक्चुअली फिनटेक समझते हैं, सो दे आर लाइक एक्चुअली बिकमिंग मच बेटर पार्टनर्स टू देयर फाउंडर्स एंड सो ऑन, वो वाली चीज़ें अच्छी हैं। बट because of all what I was talking about right now, it is necessary but it is not sufficient by a far margin। So उनकी एंकरिंग अभी तक ना बिल्डर वाली एंकरिंग है, उनकी एंकरिंग अभी तक प्रोडक्ट सक्सेस वाली एंकरिंग नहीं है।
and that's nothing to do with their talent. Is I would say like a lot to do with their anchoring. You know, what do they think is my job? Uh, that needs to evolve a lot. Where I would actually say India में जो है, it's probably like say 2 on 10 or something like that. Oh wow. It is quite low. No, I'm not kidding. Okay. Uh, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो अब इसका भी एक लॉन्ग फॉर्म आंसर भी है और इसका एक शॉर्ट फॉर्म आंसर है. मुझे लगता है कि इकोसिस्टम देखते हैं, ठीक है, यूएस का इकोसिस्टम देखो आप, इंडिया का इकोसिस्टम देखो. और ये अगेन आई एम से प्रोडक्ट मैनेजर्स सेम विद लाइक स्टार्टअप फाउंडर्स, मैं थोड़ा मतलब सिमिलर सा ही वे में देखता हूँ इनको. यार यूएस में ना प्रोडक्ट्स बनने शुरू हुए थे, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच कुड चेंज द वर्ल्ड एंड सो ऑन, लाइक एक्चुअली 70s से, 1970s से. तो क्या हुआ कि बहुत सारे वो साइकिल्स हुई, उसके अंदर कंपनीज बनी, बिगड़ी, लोग आए गए उसके अंदर एंड सो ऑन. बट इवेंचुअली क्या होता गया कि नाउ द कंपनीज नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. नाउ द कंपनीज नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर. वो know what to expect of a VP of business. They know what to expect of a founder and engineering and so on. तो उनको आपस में भी पता है कि कैसे करना है, क्योंकि आपका जो हेड ऑफ बिजनेस भी है ना, वो भी टेक्नोलॉजी कंपनी में पिछले 10 साल पहले कहीं रह चुका होगा. दे विल एक्चुअली ब्रिंग इन दोज लर्निंग्स एंड सो ऑन. सो दैट सॉन्ग एंड डांस देन नो. प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी पुरानी फील्ड है, मतलब हो गया एटलीस्ट 20-25 साल से तो चल रही है. इंडिया में क्या हुआ ना कि ये फील्ड आई ही बेसिकली 2014-15 में थोड़ा ठीक से है. स्टार्टअप्स खुद ही आप देखो कितने नए बनने लगे हैं उसके बाद से. सो जब स्टार्टअप्स खुद नए हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट फील्ड नहीं है, लोग भी मतलब थोड़ा सा करने लगे हैं, लेकिन एक्चुअली जो लीडर्स हैं हु आर एक्चुअली गुड एट रनिंग द बिजनेस, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो तो अभी भी FMCG से आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से आ रहे हैं. सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, बट वो आ रहे हैं और उनकी एंकरिंग अभी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाली है. अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग से है तो होगा, मतलब थोड़ी एंकरिंग होती है कि भाई फैक्ट्री में इतना पैसा डालते हैं या ये मशीन बनाते हैं तो वो चीज़ बाहर निकलती है विथ लाइक व्हाटएवर टॉलरेंस लिमिट्स. या फॉर एग्जांपल FMCG से कि अगर सेल्स में हमने इतनी मेहनत करी तो उतना फ़र्क आना चाहिए. They tend to equate, not like inherently, I would not say बोल रहे हैं वैसा, but equate that with software engineering, with building something. There are inherently all those 4 risks that are there. आपने कोई चीज़ सोची वो टाइम पे निकलेगी नहीं, तो आपका क्या पहले प्रॉब्लम? Those are the controllables you will ask product manager to solve first. भाई टाइम पे निकलना चाहिए मेरा सॉफ्टवेयर, उस क्वालिटी का निकलना चाहिए. सो इसलिए वो बहुत जगह हो रहा है. फाउंडर्स भी वैसे पूछ रहे हैं, बिजनेस फोक्स भी वैसे पूछ रहे हैं, एंड सारा टैलेंट प्रोडक्ट मैनेजर्स को यही पूछता है कि ये बनाना है, क्या तुमने वो डिफाइन कर लिया है और ये टाइम पे शिप हुआ कि नहीं. सो दे कंटिन्यू डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइकिल है, और वो बहुत डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ है. इवन इफ प्रोडक्ट मैनेजर्स वांट टू गेट आउट ऑफ दैट, the ecosystem and startups are built in such a way where they are not very conducive to that. So that's why I'm not blaming the PMs only, while I am blaming them, but there's also a lot to do with startups. So what can be done to speeden this growth of moving from 2 to let's say 5 or 6 or 7? I think it'll be both. One is both companies as well as product managers need to have this massive realization that their job is product success and eventually leading to business success, and not only building things. One, I think we also, technology companies, while we are in the era of AI and all of that, and बहुत सारी चीज़ें change होंगी, but I think we have a lot to learn from physical businesses. Software companies have a lot to learn from physical businesses. अगर आप क्या होता है ना, इनहेरेंटली क्या होता है कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, तो आपको पता है कि यार ये एक 15 दिन के अंदर मैं चेंज कर दूंगा ना, सॉफ्टवेयर अलग दिखने लग जाएगा, तो चलो कुछ शिप करके देख लेते हैं, विच इज़ फाइन. But when we are bringing groundbreaking software, when you're building great companies and so on, it is better if you think like companies which are manufacturing. अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में, बिस्किट भी लेके जाना है, आप हर 15 दिन में नए बिस्किट थोड़ा निकालते रहते हो. यू वर्क बैक फ्रॉम अ प्लान कि एक साल बाद ये बिस्किट बनाना है भाई, तो कैसे बनेगा, कितना प्राइस पॉइंट पे होगा, मार्केटिंग क्या होगी, एंड सोच के करते हो ना थोड़ा. उससे थोड़ा सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट एंड लाइक एक्चुअली इन्वॉल्व, लाइक एक्चुअली बिल्ड योर प्रोडक्ट्स. आई एम नॉट लाइक एग्जैक्टली लाइक दैट, बट वो वैसा सोच करके आप अपना सॉफ्टवेयर बनाओ एंड आइटरेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रादर देन ओनली keep launching something till the cows come home. And I've recently tweeted about that also, like doing that process is almost like evolution by natural selection जो होता है ना, कि यार अब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, फिर अब वैसे एवोल्यूशन हो गया कि गंदा सॉफ्टवेयर कस्टमर छोड़ते रहेंगे, अच्छा सॉफ्टवेयर चलता रहेगा फीडबैक साइकिल के साथ में, तो हमें सही में बिलियंस ऑफ ईयर्स ही लगेंगे till the time we reach miracle like a human eye. But you can actually play a creator, you can play God and literally build it from what you want to actually ship. Wow, okay, superb.
I mean, if you look, if I have to think about physical product like let's say simple product like Parle-G also. हम्म I mean, it has remained evergreen for हम्म decades हम्म now, right? I mean, Maggie. हम्म उन लोग समझ गए थे कि पहले भी it will be habit forming, अभी भी I mean whoever हाँ consumes it can be habit forming. that's right. So मेरे ख्याल से they somehow they just get the gist of how consumers think also. Yeah, and I think that's a different, or a good segue into the other things, which is product कैसा बनाना चाहिए भी नहीं, product की positioning भी कैसी करनी चाहिए, Hmm. which the right kind of consumers choose you. So that both of these things are arts and sciences that I feel most product managers and startup founders should now start thinking a lot more about rather than just building. ओके एनी सो ऐसा कोई ऐप है या स्टार्टअप है Hmm. जिसको आप देखते हो मतलब एज अ कंज्यूमर Hmm. एंड आपको लगता हो यार मतलब इसके प्रोडक्ट मैनेजर्स की तरह अगर हम लोग सोचना चालू कर दें तो फिर इट विल बी फैंटास्टिक टू बी ऑनेस्ट ना, ऐसे मेरे ख्याल से ना थोड़ा जितना भी हमने बात करी ना, हाँ इट्स नॉट लाइक आई वुड से वन साइज फिट्स ऑल. हाँ हाँ डिफरेंट स्टार्टअप्स आर एट हाँ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द जर्नी, डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट. या कुछ कुछ जगह पे होता है जहाँ पे एक्चुअली सेल्स इज डूइंग द वर्क बिकॉज B2B कंपनी है, हाँ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ही करना है, करेक्ट बनाना ही है, एंड सो करेक्ट ऑन. सो नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, श्योर आई थिंक कुछ स्टार्टअप्स हैं जैसा सोचना चाहिए. मेरे ख्याल से Airbnb इज लाइक वन ऑफ दो स्टार्टअप ओके where they have eliminated, मतलब वो उसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट बोलते ही नहीं है. अच्छा So प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्लस प्रोडक्ट मार्केटिंग एक ही चीज़ है. अच्छा आप ही का काम है कस्टमर लाना और उनको सर्व करना, हाँ एंड देन और पोजिशनिंग करना अपने प्रोडक्ट की, एंड सो ऑन. हम्म, सो दे थिंक ऑफ दैट, कस्टमर ने बाहर मेरा गूगल पे या यूट्यूब पे ऐड देखा हाँ से लेकर वो प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे गया, मेरी ऐप डाउनलोड हुई, से लेकर मेरी ऑनबोर्डिंग जर्नी में आया, लॉग इन साइन अप से लेकर एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस आहा मोमेंट से लेकर फाइनली बुक कर पाया, एंड देन व्हाई वुड दे कम बैक एंड सो ऑन. वो पूरी जर्नी एक इंसान को बनानी है, या और एटलीस्ट वो सोचनी पूरी एक साथ में. And that, for example, is like one way that I truly मतलब emphasize कि ऐसे ही होना चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि आप ना एक प्रोडक्ट की जर्नी को एक कंज्यूमर की लाइफ साइकिल में एक मूवी की तरह कंपेयर कर सकते हो. अब क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने यूट्यूब की कुछ चीज़ बनाई, बीच में ना एसईओ के किसी बंदे ने आपका प्ले स्टोर का पेज बनाया, फिर आपका ऑनबोर्डिंग जर्नी किसी ग्रोथ टीम ने बनाई है, प्रोडक्ट मैनेजर ने डिजाइनर के साथ बनाया है. अब वो आपकी मूवी ना एक शिजोफ्रेनिक मूवी है, उस मूवी के अंदर सीन ऐड ही नहीं हो रहे. शुरुआत में शाहरुख खान है, बीच में अल पचिनो आ रहा है, फिर अमिताभ बच्चन रो रहा है, फिर अल्टीमेटली पता नहीं हेमा मालिनी डांस कर रही है, आखिर में कुछ और ही निकला. सो या सो ये जब अलग अलग होता रहता है ना तो बहुत तो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होते. So either product managers have to do a lot of heavy lifting, or senior leaders in the company has to basically edit out all of these things and make sure that these teams are dancing with each other. अच्छा वो भी आप अच्छे से करोगे तो भी हाँ. काम चल जाएगा, बट आई थिंक ये भी कई जगह नहीं होता क्योंकि अलग अलग जगह बैठे होते हैं. ओके द रीजन वाई जैसे जुपिटर के अंदर भी मैं प्रोडक्ट और मार्केटिंग दोनों देखता हूँ, श्योर एंड आई एम नॉट सेइंग सबको ऐसा करना चाहिए, या बट आई कैन नाउ सी कि यार ये कुछ और टीम है, ये कुछ और है. जैसे डिज़ाइन बन रही है और जैसे मार्केटिंग की डिज़ाइन बन रही है उसमें भी कितना फ़र्क है. या So it's my job to like actually make sure that they talk in the same language, the same tone, Okay. and so on. Great. Now, moving slightly away from product, I mean, I'm keen to understand कि अभी जो state of startup ecosystem जो बोला जा रहा है, मतलब the whole bashing which has been done कि यार मतलब अभी वो ये startup ने इतना वो layoffs कर दिए, ये वो ऐसा ऐसा. What's your view of this whole situation, right? Because up until 2 years back, people were making them gods, and today they are, I mean, just out there for founders' blood, right? so क्या है आपका assessment इस चीज को लेके? Yeah, Naveen, actually आपको और स्वाति को कहीं ज़्यादा पता होगा इसके अंदर. You meet like a lot of startup founders and you help them get the right people and so Yeah. on. So I will share my point of view, Sure. right? And like probably not very different from what your point of view is here right now. I think last decade was like a fantastic decade with respect to like अब मैं global macroeconomics का तो मैं कोई ज्ञाता हूँ नहीं, लेकिन मुझे जितना समझ में आता है, like funds were easy, available and so on. A lot of risk taking was also encouraged कि आप रिस्क लो, आप कुछ बना के देखो, अगर बनता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बहुत वैल्यू करेंगे, अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं. दैट वाज काइंड ऑफ वन ओरिएंटेशन. द अदर ओरिएंटेशन वाज कि आप टेक्नोलॉजी कंपनी हैं तो फंडामेंटली
technology is like a leverage, right? Like Naval Ravikant says, there are only three leverages in the world. Like one is technology, the other one is people, and the third one is capital. So अगर आपको fundamentally technological leverage मिला हुआ है, that means distribution आपको मिल जाएगा, आप scale कर पाओगे. You won't need like 1,000 people to do that sale, and like हर चीज़ वो वैसे नहीं होती है, replicate नहीं करनी पड़ेगी. तो आपको एक इनहेरेंट मल्टीपल मिलता ही था उसके अंदर, इसलिए लोग आप पे रिस्क भी ज़्यादा लेते थे. ये दूसरी ओरिएंटेशन थी. तीसरा ये था कि जनरली रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा थी लोगों की, इन्वेस्टर्स होंगे कोई और होंगे एंड सो ऑन. मुझे लगा कि सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं. अब क्या हो रहा है, वो लास्ट डेकेड तो वापस नहीं आने वाला. अगेन फ्रॉम व्हाट आई हर्ड, अब दैट्स गॉन एंड गॉन. अब कभी जीरो इंटरेस्ट रेट पे पैसा वैसा अब तो मिलने वाला है नहीं. So fundamental shift वहाँ तो हुआ है. Second, I also feel now most the ways businesses are valued now are not. अब आपको टेक्नोलॉजी एज ए लेवरेज का उतना मल्टीपल नहीं मिल रहा. श्योर टेक्नोलॉजी है, फाइन, ये सब मिल मिला के, लेकिन आपका बिजनेस P&L कैसा दिखता है वैसे ही देखा जा रहा है, which is in my opinion a good thing. Sometimes it may be a bad thing because then you may never catch like a great company like say an Nvidia कि अचानक ही कुछ बन जाए and then you are left wondering. But वो नहीं हो रहा है अभी उतना ज़्यादा कि अब हर कंपनी को प्रॉपर बिजनेस मेट्रिक्स पे इवैल्यूएट किया जा रहा है, एंड उतनी लॉन्ग रोप नहीं दे रहे हैं कि यार अब तो ना 20 नई चीज़ ट्राई करो, एक तो चलेगी, वो भी चल गई तो इतना ज़्यादा हो जाएगा एंड सो ऑन. I think that patience is reducing now. So because of all of those things, you can see fundamentally how startups have now to change. मुझे लगता है कि 2022 में और 3 में टॉप लेवल पे जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं उन लोगों को ये बात समझ आ चुकी है ज़्यादातर, एंड दे आर एंकरिंग देमसेल्व्स टुवर्ड्स द न्यू रियलिटी. बट ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ऊपर की प्लेट खिसक गई है. अभी जो लीडरशिप की, एक्चुअल वर्कर्स की, वो सब के उनके एक्सपेक्टेशन अभी तक पूरी तरह चेंज नहीं हुआ. तो इसलिए देयर इज स्टिल गोइंग टू हैव लाइक अ लॉट ऑफ यू नो, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हर साल मुझे 20% तो इंक्रीमेंट मिलना ही चाहिए. मेरा काम तो ऐसा ही होना चाहिए. आई विल मेक मिस्टेक्स एंड सो ऑन. सो वो अभी तक एंकरिंग वर्कर लेवल पे उतनी चेंज नहीं हुई है. सो मेरा एक छोटा सा व्यू है जो मतलब ऑब्वियसली आई विल शेयर, एंड आई डोंट नो, मतलब आप थोड़ा सा लाइट इस पे भी डाल सकते हो. जब मैंने अपना करियर चालू किया था 2006 में, और 2006 से 8 भी एक अच्छा खासा पब्लिक मार्केट में बूम चला था. करेक्ट. एंड देन सडनली 2008 में आया सबप्राइम, और सबप्राइम ने धो डाला मार्केट को. आई मीन वो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, एवरीबॉडी वाज सेइंग दैट ये जो 6 से 8 हुआ है कभी नहीं आएगा, वो तुमको कभी नहीं मिलेगा. और फिर उसके बाद 2008 से मेरे ख्याल से 11 तक पेन चला था. 2009 तो वाज वेरी बैड. मतलब एवरी सेकंड कंपनी पीपल थॉट दैट आईसीआईसीआई बैंक विल क्लोज डाउन एट दैट पॉइंट इन टाइम. पीपल वर लाइनिंग अप आउटसाइड एटीएम्स टू टेक आउट मनी. तो सो जब लोग, और उस समय ना मेरे ख्याल से मार्केट हैड हिट 12,000 एंड पीपल सेड दैट भाई सेंसेक्स इसके ऊपर नहीं जाना. अब तुम भूल जाओ वो सारा वो. और फिर उसके बाद टैंक्ड टू 7-8,000 एंड देन उसके बाद पीपल फेल्ट दैट भाई पीपल, आई मीन द कंडीशन हैड बिकम वेरी बैड. एंड देन टुडे लुक एट वेयर सेंसेक्स इज. Then today again look at where pagalpan is. I mean that craziness came back. And fortunately or unfortunately, people have weak memory. They suddenly forget everything. जब पॉजिटिविटी होती है तो फिर सब लोग फ्रेंजी होती है, बिल्कुल तब लगता है कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा. हर बार वो पान ठेले वाला भी स्टॉक मार्केट टिप्स देता है. तो बोल हर बार बोले यही ज्ञान दिया जाएगा, अरे जब पान ठेले वाला दिया देना तो फिर स्टॉक मार्केट से निकल जाओ. अरे बट उसमें से भी तुम पैसा बना रहे हो. तो सो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एनालॉजी, कैन आई ड्रॉ दैट सिमिलर एनालॉजी हियर एज वेल, बिकॉज मेरे को लगता है कि सो पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट दीज tech guys are getting overly paid, which they don't deserve also. So what do they deserve, what do they not? Eventually अगर आप देखोगे हमारा टैलेंट vis-a-vis what US का टैलेंट है, उसके कंपैरिजन में तो हमारे लोग तो मतलब are not getting paid as much, right? मतलब I don't know what that's the way I'm looking at it from outside. So just you can't compare them with service talent. So अब मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि यार इन्फोसिस वाले हो तो 2 लाख मिलता है, इसको 20 लाख कैसे मिल रहा है. तो वो तो मेरा कंपैरिजन ही गलत है. राइट. अब प्रोडक्ट का मेरे पास था नहीं कंपैरिजन, तो फिर सबको लग रहा है कि यार कैसे मिल रहा है ऐसा. तो व्हाट इज योर व्यू?
यार मेरा ना फंडामेंटल व्यू थोड़ा इसमें एकदम प्योर कैपिटलिस्टिक व्यू है. मुझे हाँ. लगता है कि एवरीथिंग इज वर्थ व्हाट इट्स परचेजर इज विलिंग टू पे फॉर. Yeah. Ultimately वही ही है. Exactly. There's all there is to Yeah. pricing. Yeah. Pricing when I'm saying like essentially wages and all of that, unless like you have government interventions Hmm. and all of Hmm. those things, I think, right? So the way people are being paid today are again, um, you think about the valuations and the values that's value that startups are creating. उनके अंदर कितने लोग चाहिए प्रोडक्ट के अंदर एंड इंजीनियरिंग के अंदर, और उसके हिसाब से कितना मिल रहा है. Hmm. नाउ द रीजन व्हाई आई से दैट इट इज अ लिटिल टफ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स इज फर्स्ट, ओवरऑल मैक्रो कंडीशंस के कारण एक तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स थोड़े उतने फंड हो नहीं रहे. Hmm. बी इज जितने हो रहे हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग इवेल्युएटेड ऑन देयर fundamental P&L rather than pure risks Yeah. and so on. And the third one, and I mean, I think that is very interesting, combined with the first two, where people are rationalizing what to build with how many resources that I have and so on, is actually, I feel, is the way that is going to come in the next, it has already started coming, is in AI. Um, so essentially, what is AI doing? It's helping people do more, or B, you can look at it like less number of people achieving all of the things that a lot of other people were doing. So now, for example, some of the new tech companies that I'm seeing are actually starting with way less number of Yeah. engineers or for example even marketers and so on. I'll give you an example. There's a friend of mine who runs this very interesting STEM uh, toys company. Acha. Yeah, Series B, I think. And they had like a large marketing department earlier, some 8-10 people and so on. And whenever they used to launch a toy, somebody had to actually ship the toy to the US. US में फिर then they will hire like photographers and they will like hire like all of these equipments and all, and the models, the kids who are sitting together, one black kid, one white kid, one Indian kid who's laughing a little bit more, and all of that. And then the shoots would go on for like 1 day, 2 days, and so on, so that the toys are shown in the best way possible. They have removed all of them now. Okay. Now there are two marketing interns working on Mid-Journey Acha. who are able to recreate all of that, and they are able to like do way more number of digital creatives, way more number of experiments, and so on. So every time when a new toy would cost, for example, $10,000 ka ek shoot. Now it is basically some $25 of Mid-Journey with two interns who are working on that, and those jobs are gone now. They're not coming back. Wow. So I think on the creative pursuits, etc. I'm not saying all of them, of course, because it will still be a time. But some of these things you can see that you may not have a requirement of so many people to get like high quality. In a lot of cases, I've heard like some companies who are saying, CEOs asking their, or CFOs asking their CTOs, hey, have you started using Copilot? So I'm saying yes, and how much is an engineer better because of Copilot? I don't know, it's hard to do the math, but maybe 20%. And then they're saying, okay, slash 20% workforce. Now we can do this with so many engineers. No, I'm not kidding. These are real conversations. Acha. Yeah. Okay. So let's say if the market has to prepare itself, क्योंकि एक तो ये चीज तो गिवन है कि डेमोग्राफिक्स में ज्यादा कुछ नेगेटिव है नहीं इंडिया के, मतलब अगले 10 साल तो फिर भी अच्छे दिख ही रहे हैं, राइट? तो so whenever somebody has to, let's say, start today, what should they not over ऑप्टिमाइज ऑन? बिकॉज मतलब अब क्या होगा कि एक तो एक तरफ था एक एंड जहाँ पे लोगों ने देखा गंद मचाया, अब दूसरा एक वो अब एंड आ गया जहाँ पे अब लोग सोचेंगे यार मतलब इतना ज्यादा हाँ करना ही नहीं है, मतलब सो इतना कॉशियस हो जाओ कि ना तो ग्रोथ है ना तो देन फॉरगेट अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी इटसेल्फ. I understand. No, I think it goes back to what the conversation we were having there earlier, Naveen. ये pendulum दूसरी तरफ swing नहीं होना चाहिए. I think there's a right balance where you need to marry, अब सिर्फ आप ये नहीं कर सकते हो कि I will build things and people will come. Now your eye for finding a real market gap has to be way sharper. And the way to address that market gap with your product has to be even more, I would say, tighter, rather than the attitude of I will build and people will come. So I think just that orientation and that understanding of that, I think is going to be like it sounds very simple, but I think it's going to be a killer. It's just going to be a force multiplier. The other one is actually understanding your business way better from the beginning itself. That this is how in year 1, year 2, year 3, I turn profitable. And of course, things are going to go completely off. Of course. Sure. But like they say, plans are worthless, but planning is everything.
So, and you keep revolving your plans and so on. Always have like a great handle on your business. And I know so many startups, like including the ones that I have worked in. I, for the longest time, they didn't even know how much, how many months till we die, Oh. because funding is there. It will come. हाँ, Like, who हाँ. cares? I'm too busy building my product. Yeah. Okay, super. So my last segment, Anuj, and मतलब एक चीज, one thing which I admire about you as a person, I mean more than a professional, is that आपने एक बात की थी रेंज वाली, राइट, हाँ. जिसमें इंसान के मल्टीपल वो एस्पेक्ट्स होने चाहिए पर्सनालिटी के, एंड विच इज़ व्हाट आई हैव सीन यू डूइंग इट एफर्टलेसली, बिकॉज बहुत लोगों को ये लगता है कि यार मतलब अब कलीग्स के साथ हैंग आउट भी करना है, यार अब नेटवर्किंग भी करना है, मतलब एंड देन दे स्टार्ट काउंटिंग इट एज वर्क, राइट, एंड सो होता क्या है कि एंड आई थिंक आपने बहुत ब्यूटिफुली you have played poker with not only your current but ex-colleagues, and there is so much camaraderie, and there is so much, I mean, you guys seem to have each other's back all the time. I was there in one of the mixers which you just organized, and आप ये सब चीज़ें बियॉन्ड वर्क करते हो, और अब मतलब अभी भी जो आप हो वो बियॉन्ड वर्क कर रहे हो, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपके वो चेहरे पे वो कोई शिकन है कि मैं क्यों आ गया, घर पे जाना है, बीवी वेट कर रही है. So and you are also balancing everything beautifully. So and I believe that and I strongly believe that and हम लोग की टीम में कई बार ऐसा challenges आते हैं कि forget about external stakeholders, इंटरनल स्टेक होल्डर्स के साथ भी जब उनको वो हम लोग रिमोट ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग बोलते हैं यार हफ्ते में एक बार मिल लिया करो एक वो वी वर्क में, वो भी काफी पेनफुल लगता है, मतलब अरे तो फिर तो सो देन में वो लगता है कि मतलब तुम यू आर इन अ पीपल बिजनेस, राइट, एंड इट शुड नॉट सीम वर्क लाइक फॉर यू, एंड मुझे तो हमेशा लगता रहता है कि यार काश हमारा भी ऑफिस होता, उतने पैसे है नहीं तो फिर ऑफिस नहीं रख सकते, बट सो बट थैंकफुली अब बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड बिकॉज ऑफ कोरोना, तो इट कैन बी वी कैन से दैट वी आर रिमोट ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज important to build that human capital and have various aspects of your personality. That's right. When I do theater, it never seems like work. When I am doing this, Saturday Sunday वो निकाल के करना पड़ रहा है, तो फिर it never seems like work. Now I don't think that कल मेरे को मिलियन व्यूज कब आएंगे, नहीं आए तो फिर it is work. तो आप कैसे इस तरीके से सोच ले, तो how did it come to you, and what can people learn from it? I mean, consciously, you're putting too much responsibility on me in terms of how can people learn from it. I'll just talk about like the way again, it's an orientation thing. Naveen, I think maybe I've been lucky enough also to do that, where the works that I have chosen to do in my life, and actually the rest of the things that I do, I don't think of that as like some sort of a different thing. It's all parts of my personality, who is like playing the role of an executive at say Jupiter or a Swiggy, or like a person who's actually organizing poker or a secret story, which is the networking event, or like mixer that you talked about, or meeting you guys. Like all of these are very very fun things for me. I don't look at them as कि ये पैसे कमाने के लिए है और ये इस समय एक पार्ट है which is for करना पड़ेगा because mixer and so on. I feel this is all if you think about all integrating together, then I think that at least that's my orientation. Ki it doesn't feel like work because it's all a part of the same thing. It's like Anuj's growth as a human, and all of these things are contributing to it. So मुझे तो उस तरीके से लगता है कि ये सब ज़रूरी है. The other thing which interestingly you talked about, right, which is कि people, for example, like you talked about your org, like I've seen like in so many orgs, which is like कि यार ये काम करना है, ये human capital और ये सब चीज़ें तो दूर ही रखो, etc. I think that is and maybe COVID has like created that part along with like the loneliness generation that we are now seeing. All of that, it is kind of multiplying, and that is stopping, for example, a lot of serendipitous learning. Naveen, I am big on that. Like we talked about that in range, but only when I'm meeting like you folks, like for example now or in mixers or in other places, etc., beyond what my core job is, only then I will get to know things about, say, what's happening in the field of AI, what's happening in medicine, what's happening in manufacturing. Now I can hear about stories from semiconductors and so on. You know, so one is like your core job, yes, sure, and you have to perform like great there.
but you also need to know you are also a citizen, you are also a person who is building your career, and आगे की चीज़ें क्या हो रही हैं आपको पता होना चाहिए. So it serves you very well. It actually creates the opportunity of serendipitous learning also. And I think the people who are getting the most hurt by this are folks who are just new to the workplace. Yeah. Because the only kind of work that they've seen is appearing in Zoom and like doing their part of the work and coming back. It hurts even more, and it works and hurts even more. For example, people who need to do very focused work, like engineers, they need like X amount of hours to like go deeper into problem and then be in the zone and to write the code and all of that. They don't want to be distracted, and that's their personalities. What's happened is they think that's the only way that they can work, and that is sufficient. I don't think that is sufficient. It is only necessary. To make it sufficient, you also need to have this other part of the personality who's speaking with other engineers, other product managers, other company people, having their own hobbies and like traveling and all of that. Only then you become like a human who's well-rounded, ready for the world. या मैं तो कभी कभार ऐसे ही बोलता रहता हूँ कि अपनी टीम को जाके इंटरव्यू दे के आ जाओ यार. कम से कम बाहर क्या चल रहा है तुमको वो तो कम से कम पता चलेगा. मैं उतना दूर नहीं गया हूँ भाई. नहीं, but ये काफी interesting actually. Netflix used to do this a lot. Like you guys may have known this, right? It was just कि in I think 2000s to 2010 जब तक उनका वो culture बहुत उस तरह से था कि go and like get the best job and whatever you come back with. We'll do 50% more than that. यही है, because we want to work only with the best. हमको सब लोग वैसे भी नहीं चाहिए. But at the same time, don't expect कि mediocre performance will be allowed. फिर हमें तुम अगर लगा कि तुम medium हो तो फिर तुम जाओ. और हमें generous severance package देके भेजेंगे. Great. So thanks a lot यार अनुज. I mean ऐसा लग रहा था कि बस वो casual chit chat चल रहा है, and that was the objective also. Yes. And and आपने संडे शाम को समय निकाल के आए हैं तो फिर really thankful for that. And yeah, if you have any final thoughts, I mean, would love to hear, and then maybe wrap up. No, I think, first up, thank you for having me here. And I've seen, like, हम लोग की जब हम 6 महीने पहले मिले थे गोवा के अंदर, and you just had like a thought of कि यार ऐसा कुछ करते हैं. And look, we met there in Goa serendipitously, and you met Joginder Pai and like all of that serendipitously, and you just had a thought कि कुछ करना है. And you got started. I think that is probably one of the things that I would ask, like that I think is like very important is high agency. As don't wait for the perfect answer. While I say work backwards, but at the same time, उस outcome के बिना भी आप सोच सकते हो कि यार agency तो दिखाते हैं. Am I in the right direction? So just like you guys have done this, and now look at the podcast is doing so well, and I wish you all the best. Thanks a lot. Thank you. Awesome. Yeah.